Hello students, from this video we are going to discuss important questions of different subject chapters. So we will start our revision from the chapter endocrine system, and we are on the very first question of endocrine system, that is nervous control and hormonal control differences. So what is the difference between hormonal control and nervous control? The very first difference is hormonal control usually works slowly, while nervous control works immediately or rapidly. Like if I ask you, go and bring 1 glass of water, that is a very quick action. While hormones, suppose I said something which you don't feel comfortable, which you don't feel good. So after 2 hours or 3 hours, you will feel set for that. If the growth is there, so that growth because of hormone take time to develop the bones and all. So hormonal control or hormonal response is very slow. It is transmitted chemically through blood. Hormones can transmit it through blood only, while nerves works under the electrochemical transmissions. They transfer nerve impulses through nerve fibers across the synapses. Hormones affect any particular organ, widespread in the body. And nervous affect only the particular muscle or particular gland. If I ask, okay, speak something, so then your mouth will work only. Okay, and hormones, they work on different areas. Hormones effect is short term or long lasting. दोनों हो सकते हैं. Generally, it is long lasting. Okay, while the nervous system effect is short lived. I asked you 2 plus 2, you answered 4. तो आफ्टर सम टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि 4 का कोई इफेक्ट रहने वाला है, बट हाँ हॉर्मोन्स का इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है. हॉर्मोन्स कैन कॉज ग्रोथ, नर्वस सिस्टम कैन नॉट कॉज ग्रोथ. Hormones bring about specific chemical changes and regulate metabolic reactions, while nervous system does not bring any kind of chemical change in the body, and they do not regulate metabolic reactions at all. Okay. So the another one important question is, what is the difference between exocrine gland and endocrine glands? Exocrine glands are the glands that does not contain duct, while endocrine glands are the glands which contain ducts. Exocrine glands secrete chemicals and enzymes, while endocrine secrete hormones. Exocrine glands secrete their secretion in the different body surfaces or body parts, while endocrine secrete their secretion into blood only. Exocrine glands, these glands possesses duct for discharging their secretions on the body surface. The sebaceous gland, that is oil glands, present in the skin. Salivary glands secrete saliva in the buccal cavity, that is mouth. Gastric glands secrete enzymes in the wall of the stomach. These are the few examples of exocrine glands. Endocrine glands do not discharge their secretion through duct, hence they are also known as ductless glands. They discharge their secretion directly into bloodstream. Their secretions are known as hormones. The pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, etc., etc. And another important difference is, what is the difference between diabetes mellitus and diabetes insipidus? Mellitus means meeta and insipidus means tasteless. Diabetes mellitus is the disease which is due to hormone insulin, while diabetes insipidus is due to deficiency of ADH hormone, that is antidiuretic hormone, or this is a disease due to vasopressin hormone. Vasopressin is another name of ADH hormone. Diabetes mellitus causes high blood glucose or blood sugar, which is resulting from the body's inability to use blood glucose for energy. While in diabetes insipidus, people with diabetes insipidus have normal blood glucose. Glucose का कोई चक्कर नहीं है. डायबिटीज इंसिपिडियस में क्या होता है, एडीएच हार्मोन कम सिक्रीट होगा. एज एडीएच इज लेस सिक्रीटेड, दैट्स व्हाई इट एब्सॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन.
ये यूरिन में से कम वाटर एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिन विल प्रोड्यूस, ज्यादा से ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। जो ज्यादा से ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, आपको बार बार यूरिनेशन होगा, बार बार थर्स्ट होगा, प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। The another one is the difference between simple goiter and exophthalmic goiter. Simple goiter is the iodine deficiency goiter. It is caused due to lack of dietary iodine. थायरोक्सिन की कमी से हाइपोथायरोक्सिन की वजह से होता है। Lack of iodine results in lack of maturation of thyroid hormones and it results in hypothyroidism, जिसकी वजह से हमको hypothyroidism होता है। Now, in exophthalmic goiter is due to secretion of more thyroxine hormone. It is due to hyperthyroidism. ये hyperthyroidism की वजह से होता है and it results in increase in basal metabolic rate. बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वी विल राइट डाउन मोर पॉइंट्स। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, एंड पर्सन लूज वेट, वेट लॉस हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। एपिटाइट इंक्रीज, भूख ज्यादा लगती है। सिमिलरली, लेट्स करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ एपिटाइट. Okay, leave it. Now, in case of hypothyroidism or simple goiter, in simple goiter, we are more exposure to cold. हमें ठंड ज्यादा लगती है। High demand on the body for thyroxine. ये तब होता है जब बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की डिमांड ज्यादा है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर थायरोक्सिन की आयोडीन की डिमांड ज्यादा होती है, तो हमें यदि आयोडीन नहीं मिलता तो हमें सिंपल गोइटर हो सकता है। यदि हमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर टू कोल्ड है, या हम बहुत फैटी है, ओबेसिटी है, या हम बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट पर हैं, तब हमें सिंपल गोइटर हो सकता है। इसमें क्या होता है, डिसएप्रोप्रिएट या डिसप्रोपोर्शनेट स्वेलिंग होती है नेक में। इट कॉजेस डिसप्रोपोर्शनेट स्वेलिंग इन नेक। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर इरेगुलर स्वेलिंग है और यहाँ पर जो स्वेलिंग है वो रेगुलर स्वेलिंग है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में एक और खास बात है, ऑप्थेल्मिक वर्ड जो है वो आईज के पीछे वाटर रिटेंशन की वजह से है। तो जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है उसमें आपकी आंखों के पीछे पानी रिटेन हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ स्वेलिंग इन आईज, आईज के अंदर स्वेलिंग होती है। ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between enzyme and hormones? Look here, enzymes work on a particular substrate. ये substrate enzyme के साथ में duct के थ्रू रिलीज होते हैं and then they form enzyme substrate complex. While hormones are released directly into blood. ये secreting cell से सीधे blood में जाएंगे और blood से ये target cell के अंदर जाते हैं। What is the difference between hormones and enzymes? Hormones are secreted by ductless glands, while enzymes are secreted by duct glands. Hormones travel through blood, enzymes travel through duct. Hormones require a very minute quantity, enzymes comparatively ज़्यादा require होते हैं। Hormones का action काफी slow होता है, enzymes का action fast होता है। Hormones involved in metabolic activities, enzymes involved in digestion, respiration. हार्मोन्स के एग्जाम्पल है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंजाइम में पैप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इस तरीके से हो सकता है। ओके, sorry. Our next question is, what are the characteristics of hormones? Hormones are chemical messengers. Hormones are secreted by endocrine glands. Hormones carried by the blood and they perform different physiological process. The organ on which the hormone acts is known as target organ. उसे हम क्या बोलते हैं, target organ बोलते हैं। Okay, the target cells on the organs have receptors that recognize the respective hormones. Target organs के ऊपर specific receptors होते हैं जो उन hormones को recognize करते हैं और वो उनको action करने में help करते हैं।
Besides that, what are the characteristics of hormones? Hormones are secreted by endocrine glands. Hormones are secreted directly into blood. Hormones are chemical messenger and act on target organ. Hormones works on a specific target organ. Hormones can be made up of protein, peptides, cholesterol, and steroids. And more or less, these are the characteristics of hormones. Okay. Now, our next question is, give explanation of the following. The pituitary gland is called the master gland. Pituitary gland is called the master gland because pituitary controls all other endocrine glands. Please mark this. इसमें जब आप लिखेंगे answer, I will write answer here so you can understand. It controls all other endocrine glands. Now, if you will not mention endocrine glands and if you are writing all other glands, then this answer will be incomplete. ये आंसर आपका incomplete होगा. The reason is it is not controlling sweat glands, it is not controlling salivary glands. It controls all other endocrine glands. Now, why adrenaline is called emergency hormone? Adrenaline को हम emergency hormone क्यों कहते हैं? Because it prepares us for emergency. अब ये इमरजेंसी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करता है? इंक्रीज ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर, इट इंक्रीज ग्लूकोज, इट इंक्रीज हार्ट बीट. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इंक्रीज हार्ट बीट, इट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल. तो ये हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो इट कैन प्रिपेयर अस फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन. कॉन्ट्रैक्ट स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स को प्रिपेयर करता है ताकि वो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें. जैसे सपोज आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जहां आग लग गई है, पिट्यूटरी क्या करेगा? सॉरी, एड्रेनलिन हार्मोन विल सिक्रीट, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा एंड इट विल प्रिपेयर फॉर दैट फाइट और फ्लाइट कंडीशन. It will release extra glucose into the blood, which provide you energy and that prepare you for that particular act. Okay. Why older people tend to feel more cold? जो बूढ़े लोग होते हैं या older people होते हैं, क्यों उनके अंदर ठंड के लिए cold क्यों ज्यादा फील होता है? सॉरी, the thymus is larger and more prominent in children below 12 than in adults because the size of the thymus increase from infancy to adult and then decrease from adult to old. Okay. Next question is, older people tend to feel more cold. With advancement of age, the thyroid frequently slow down and the body heat production is lowered. जैसे जैसे हमारी एज होती है, size of thyroid reduces. It means it will reduce metabolic activities. It will reduce energy production. So we are more prone to cold. Now, why goitre is usually observed in people living in hilly areas? Sorry, before that, why iodine-rich food must be included in our diet? Iodine-rich food must be included in our diet because it is required for the formation of thyroxine hormone. ये आपको इस तरीके से आंसर नहीं लिखना है. This is just for the keyword that I am writing. Why goitre is usually observed in the people, those who are living in hilly areas. जो लोग hilly areas में रहते हैं, उनके अंदर goitre क्यों ज्यादा होता है? Because soil of hilly areas deficient in iodine. अब यदि वहां की soil iodine में deficient है, तो वहां की vegetation
आयोडीन में डेफिशिएंट होगी. इफ आयोडीन इज वेजिटेशन इज इन आयोडीन डेफिशिएंट, तो हमें डेफिनेटली अच्छा आयोडीन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमें गोइटर हो सकता है. Some ladies develop beard, mustaches and masculine voice. This condition is known as adrenal virilism. इसको हम क्या बोलते हैं? Adrenal virilism बोलते हैं. It is due to the glucocorticoid hormone hyposecretion. देखिए, in case of hyposecretion of glucocorticoid hormone is secreted from adrenal gland. ये एड्रीनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट होता है. यदि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन आपकी बॉडी में कम सिक्रीट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ACTH, दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फ्रॉम द पिट्यूटरी, ताकि वो एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करे टू रिलीज मोर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसकी वजह से इट इंक्रीज एंड्रोजन हार्मोन. एंड एंड्रोजन इज मेल सेक्स हार्मोन है. ये मेल सेक्स हार्मोन है, जिसकी वजह से, जिसकी प्रेजेंस की वजह से फीमेल के अंदर कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगती हैं. बियर्ड होगा, दाढ़ी होगी, मुस्टेक्स होगा, अपर लिप्स पे बाल ज्यादा होंगे, मस्कुलाइन वॉइस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Why mouth dries up and the heartbeat increases during maiden speech? जब आप कोई स्पीच देने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पर आपका मुंह सूख जाता है. ठीक है, क्यों सूख जाता है, क्यों उस टाइम पे आपको इस तरीके की कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ adrenaline hormone. See, mouth dries up, the heartbeat increases during maiden speech. This is because of the secretion of adrenaline hormone. Adrenaline hormone is preparing you for that emergency situation. उस emergency situation में heart beat बढ़ेगी, salivary gland का secretion कम हो जाएगा. Because of that, mouth dries up. Milk is secreted from the breast. Milk is secreted from the breast of the mother during suckling by the infants. जब बच्चा सक करता है तो मिल्क सिक्रीट होता है फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ द लैक्टेटिंग मदर, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन ब्रेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड इट वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन. यदि ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होगा तो मिल्क का सिक्रीशन भी बनेगा. देयर इज एन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉडी की ग्रोथ कंपैरेटिवली तेजी से बढ़ती है, बिकॉज एट दैट स्टेज मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर इन एक्टिव स्टेट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. थायरॉक्सिन हार्मोन है, दे आर इन मोर इन क्वांटिटी एट द टीनेज. Insulin is administered to individuals suffering from diabetic mellitus in the form of injection, not in the form of tablets. See, insulin क्या है? Insulin is protein. Okay, if you will ingest in the form of tablet, यदि वो आप इसको टेबलेट के फॉर्म में खाएंगे तो क्या होगा? वो स्टमक में जाएगा. स्टमक में जाएगा तो वहां से क्या होगा? स्टमक क्या करता है? स्टमक डाइजेस्ट प्रोटीन, ये उसको डाइजेस्ट कर देगा. आपकी बॉडी को यूज करने के लिए इंसुलिन नहीं मिलेगा. नंबर 1. नंबर 2, इंसुलिन इज अ हार्मोन. इंसुलिन एक हार्मोन है एंड दैट हैज टू बी रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड. वो डायरेक्टली ब्लड में ही जाना चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो we inject insulin in the form of injection rather than in terms in the form of oral tablets. This all I want to discuss for today, and the rest of the questions we will discuss in next video. Till then, take care. Goodbye.